वन जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मिशन टीचर। आज आपण मानक पई मोस्ट एवेटेड क्लास अच्छी जोटा कि बहुत आपणकर कमेंट सेक्शन ले आसुथिला जे मैम पेडागोजी रो यूनिट वाइज एमसीक्यू आणंतु। तो आज मिशन टीचर आपण मानक पई नहीं आसीची स्पेशली एसएसबी टीजीटी पेडागोजी रो पूरा सिलेबस वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यू। तो समस्ते थियोरी रु एमसीक्यू करती, तो आमे कौन करबा ना एमसीक्यू वाइज थियोरी को डिस्कसन करी करी जिबा। ठीक अच्छे, तो चलतु क्लास को स्टार्ट करबा पूर्वरु आमे टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थियोरी क्लासेस सहित डिटेल्स एमसीक्यू डिस्कसन मध्य होई थाए। जहाँ भी सबू आम यूट्यूब चैनल ले डिस्कसन होई थाए तार सबू मटेरियल्स आमर टेलीग्राम चैनल ले प्रोवाइड करा जाय थाए। ता भी पुणी फ्री ऑफ कॉस्ट रे। खाली सेतिकी नुहे, आहुरी मध्य आपण मानक पई आमे प्रतिदिन सकाळ 6टारे स्टडीज टार्गेट नहीं आसुचु, जो द्वारा आपण माने एकाथर करे एसएसबी टीजीटी सहित ओएबीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम मध्य क्रैक करि पारिबे। ताहा आमे कोथिरे प्रोवाइड करूछु टेलीग्राम रे एवं हमर व्हाट्सएप चैनल मिशन टीचर ओडिसा रे। तो जो माने भी जॉइन हेई नाहंती जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन ले दिया जाइथिबा लिंक को क्लिक करी हमर टेलीग्राम एंड हमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हेई जांतु। आहुरी आपणकर प्रिपरेशन को बूस्ट करंतु। चलंतु आजिर पेडागोजी क्लास टी स्टार्ट करिबा। पेडागोजी रो प्रथम यूनिट अच्छी देखंतु लर्निंग प्रोसेस। पेडागोजी रो फर्स्ट यूनिट अच्छी अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। और आज आमे देखिबा, तो आमे ए जो सबु यूनिट रो तीनटा लेवल देखि जिबा, गोटे लेवल 1, गोटे लेवल 2, गोटे लेवल 3। लेवल 1 रे आमे इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देखिबा, लेवल 2 रे आमे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल देखिबा, लेवल 3 रे वेरी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन देखिबा। ठीक अछि, तो आज आमे लेवल 1 देखिबा हैला। चलंतु तेबे क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करिबा। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। लर्निंग कौन बेस्ट केमिति बेस्ट डिफाइन? ए टेम्पोररी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फैटिग, ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ए चेंज कॉज्ड ओनली बाय मैच्योरेशन, एन इनहेरिटेड ट्रेट। तो आंसर कौन हम? ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग हेउची कौन? रिलेटिवली परमानेंट चेंज। लर्निंग द्वारा आमे आमर निजर बिहेवियर को निजर क्वालिटी को आमे चेंज करि थाउ। कहा द्वारा? एक्सपीरियंस द्वारा। जानि पारिले, तो आंसर बी विल बी द आंसर हैला। चलंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ लर्निंग? कोटा लर्निंग रो आउटकम नुहे? स्किल डेवलपमेंट, एटीट्यूड फॉर्मेशन, नॉलेज एक्विजिशन, इंक्रीज इन हाइट। देखंतु आउटकम ऑफ लर्निंग, लर्निंग रो आउटकम रे स्किल डेवलपमेंट हेई थाए ना नहीं? हेई थाए। जणे पाठ पढ़ुची, जदि जणे धर इंजीनियरिंग पढ़ुची, तापरे से कौन करिवो? इंजीनियर होबो, तो सेठी तार स्किल देखैबो ना नहीं? स्किल डेवलपमेंट आउटकम हैला ना नहीं लर्निंग रो? तो ऑप्शन ए ठीक अच्छी। एटीट्यूड फॉर्मेशन आमे एबे रिसेंटली प्रीवियस क्वेश्चन ले देखिलु, थ्रू लर्निंग रे आमे कौन करू? हमर बिहेवियर को चेंज करि थाउ, तो आमे हमर एटीट्यूड को फॉर्मेशन करि थाउ। तो लर्निंग रो एटा आउटकम मध्य। लैंग्वेज नॉलेज एक्विजिशन, थ्रू लर्निंग वी एक्वाइज नॉलेज। आमे नॉलेज को मध्य ग्रहण करि थाउ। तो नॉलेज भी एक्विजिशन करि थाउ। तो कोटा होबनी तेबे? इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट टा कौन होबो? ग्रोथ रो पार्ट आसीबो। एटा लर्निंग रो पार्ट नुहे। ग्रोथ हेले हमर हाइट बढ़िला, वेट बढ़िला। बुझी पारिले? तो आंसर कौन होबो? ऑप्शन डी। चलंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। लर्निंग एज ए प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व। लर्निंग हेउची गोटे प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व मेमोराइजेशन ओनली।
interaction between the learner and the environment, physical growth only, genetic inheritance. तो कौन हबो आंसर? ऑप्शन बी विल बी द आंसर. interaction between learner and environment. learner ଆଉ environment ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ interaction ହୁଏ ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୁଥଲି ରନ୍ କରି ପାରିବ. ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ବି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, according to Bloom's revised taxonomy, which cognitive process requires the highest level of thinking? କୋଉ cognitive process ଟା highest level of thinking को दर्शाए? remember, understand, evaluate, create. कौन कहिछि? न्यू ब्लूम्सकर रिवाइज माने न्यू टेक्सोनोमी अनुसार कोटा रिमेम्बर हबो ना अंडरस्टैंड हबो ना इभालुएट हबो ना क्रिएट हबो. फास्ट तो देखंतु इभालुएट तो सब बेले लास्ट को हेइथाय. हाँ ना नहीं कहतु सब बेले इभालुएट लास्ट को हेइथाय. रिमेम्बर आमे तो कोनोसी गोटे जिंस को जानिले ताकू रिमेम्बर करिवु बा मने रखिवु. कोनोसी जिंस जानिले सिना बुझिवु. तो एगुडा सब सेकेंड थर्ड प्रोसेस हेइ पारे किंतु फास्ट कोटा हबो? फास्ट हबो क्रिएट. गोटे जिंस क्रिएट हेले सिना ताकू आमे बुझिबा, बुझिले सिना मने रखिबा, मने रखिले सिना ताकू इभालुएट करिबा. तो फास्ट स्टेप कोन हबो तेबे? क्रिएट. तो देखंतु ब्लूम्सकर रिवाइज टेक्सोनोमी रो ऑर्डर टा रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इभालुएट, क्रिएट. तो तळ आडू माने तळ लेवल टा होची सबुटू ऊपर लेवल. तो फास्ट क्रिएट, क्रिएट, इभालुएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेम्बर. बुझी पारिले? चलंतु जिबा नेक्स्ट को. A teacher asked student to design an experiment to test water purity. This learning outcome belongs to. A teacher asked student to design a experiment to test water purity. से गोटे experiment कले water र purity जानिबा पाई. माने स्टूडेंट मानन को कहिले गोटे एक्सपेरिमेंट करिबा पई जोथरे कि वाटर रो प्यूरिटी जानि होबो. एटा गोटे कोन? दिस लर्निंग आउटकम बिलोंग्स टू. ए लर्निंग आउटकम टा कोथिरे आसीबो? एक्सपेरिमेंट हला रिमेम्बर रे आसीबो कि ना अप्लाई रे भी आसीबोनी, इभालुएट रे भी आसीबोनी, आसीबो कोथिरे? क्रिएटिंग. तो से माने कोन कले? क्रिएट कले ना. एक्सपेरिमेंट कले माने क्रिएट कले. तो स्टूडेंट आर नॉट merely recalling or applying information, they are designing a new experiment. डिजाइन कले माने सेटा क्रिएट कले. तो डिजाइनिंग, इन्वेंटिंग, प्रोड्यूसिंग, प्लानिंग आर ऑल वर्ब फॉर्म ऑफ क्रिएट. हैला क्रिएट रे अंडर रे सब आसे डिजाइनिंग, इन्वेंटिंग, प्रोड्यूसिंग. तो आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी. Next question, which characteristics of learning emphasizes that learning continue throughout life? Learning continue throughout life. Goal oriented, continuous, active, individualized. तो throughout life कहिछि कोन हबो? continuous. Option B will be the answer. Next question, which of the following best represents an effective learning outcome? Effective learning outcome. तो कौन? Solving mathematical equation, demonstrating respect for cultural diversity, drawing a geometrical figure, memorizing historical dates. कौन हबो आंसर? आंसर कौन हबो कहंतु? 7 नंबर रो आंसर कहिछि जे सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग आउटकम. इफेक्टिव लर्निंग आउटकम रो कोटा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन. तो आंसर हबो ऑप्शन बी, डेमोन्स्ट्रेटिंग रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी. इफेक्टिव लर्निंग रे सी पिला गोटे डेमोन्स्ट्रेट करिवो कल्चरल डाइवर्सिटी रो. तो ये जो इफेक्टिव डोमेन को जिनस ऊपर डील करे देखंतु. इफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड, वैल्यू, फीलिंग, इंटरेस्ट, रेस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, रिफ्लेक्ट वैल्यू एंड एटीट्यूड. এই যে জানিগলে এই জিনিসটা আপন মানকৰ ভুল হব नाही. इफेक्टिव डोमेन अंडर रे कोन कोन आसे? एटीट्यूड, वैल्यू, फीलिंग, इंटरेस्ट, रेस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी.
तो आमर जो 3टा डोमेन अच्छी कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर तो कॉग्निटिव डोमेनटा नॉलेज सहित रिलेटेड इफेक्टिव डोमेनटा एटीट्यूड सहित साइकोमोटर डोमेनटा स्किल सहित रिलेटेड बुझी पारिले। चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को लर्निंग आउटकम शुड प्राइमरीली बी लर्निंग आउटकमटा प्राइमेरीली कहा उपरे बेस्ट लर्निंग आउटकमटा टीचर सेंटर स्टूडेंट सेंटर एंड मेजरेबल एग्जामिनेशन सेंटर कंटेंट सेंटर लर्निंग सेंटर टीचर काम है पढ़ेबा तो आउटकमटा क्या थ्रू रु आमे पाई परिबा पिलांको थ्रू रु ना स्टूडेंट सेंटर एंड मेजरेबल आल्सो तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम लर्निंग आउटकम को स्टेटमेंटा ठीक अच्छी कौन कौन कहूँ डिफरेंशिएट लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम लर्निंग आउटकम लर्निंग प्रोसेस रु केमिति लर्निंग आउटकमटा अलगा सेटा कहूँ तो कौन हम देखु प्रोसेस फोकसेस ऑन रिजल्ट आउटकम फोकसेस ऑन मेथड process refers to how learning occurs outcome refers to what learners achieve both are identical no outcomes are independent of learning process तो आंसर कौन हम ऑप्शन बी देखंतु प्रोसेस सब बेले लर्निंग केमिति होई थाई ताहा उपरे डिस्क्राइब करे किंतु आउटकमटा कौन एचिव करिछि देखंतु आपण जिते पर्यंत जॉब पाई नांती से जो प्रोसेस से जो प्रिपरेशन प्रोसेस रे चली चंती सेटा से जो प्रिपरेशन स्टेज रे चली चंती सेटा होची प्रोसेस जेते बेले जॉब पाई जिवे सेटा आपनकर हे जिवो अचीवमेंट बुझी पारिले तो आंसर हबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए स्टूडेंट अप्लाई प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम दिस रिफ्लेक्ट जते बेले गोटे पिला प्रीवियस रु जहाँ जानी ताहा जदि प्रेजेंट लाइफ रे माने भल से माने इफेक्ट करि पारिला कि यूज करि पारिला तो सेटा कौन हम मेमोराइजेशन हम से घोषिची मन रखी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग इनसाइट ओनली तो कौन हम सेटा हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जदि गोटे पिला तार प्रीवियस नॉलेज को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट रे यूज करि पारुचे सेटा हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलतु देखिबा हमर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग केते प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होचे 3 प्रकार पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर। चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच डोमेन ऑफ लर्निंग इज प्राइमरीली असेस्ड व्हेन स्टूडेंट परफॉर्म ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कौन हम कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर इमोशनल कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर इमोशनल कौन हम साइकोमोटर सब बेले स्किल कही ना मु साइकोमोटरटा स्किल सहित रिलेटेड तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु देखि दियंतु साइकोमोटर डोमेनटा रिलेट करे फिजिकल स्किल कोऑर्डिनेशन मैनिपुलेशन इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट ड्राइंग डायग्राम टाइपिंग प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एगुड़ा सब एग्जांपल होची साइकोमोटर डोमेन रो। Which principle of learning state that meaningful learning occur when new knowledge is connected with prior knowledge जेतेबेले न्यू नॉलेजटा कनेक्ट थाए प्रायर नॉलेज सहित सेटा कौन लॉ ऑफ एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टिविज्म ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग कौन हम आराम से आंसर दे देबे कंस्ट्रक्टिविज्म सब बेले मन रखिबे जेतेबेले प्रीवियस कांसेप्ट सहित नुआ नॉलेज रो कनेक्शन अछि सेटा होची कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरिस्ट मानकर ना जीन पियाजेट भाइगोस्की ब्रूनर हैला एथरे टीचर को रोल प्ले करंती फैसिलिटेटर। चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच असेसमेंट मेथड बेस्ट मेजर हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम मल्टीपल चॉइस
fill in the blanks, project based dictation। तो मु आपन को कही हाई ऑर्डर थिंकिंग पाई सब बेले क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंटिंग ए सब जिनस दरकार। मल्टीपल चॉइस रे फास्ट तो मते कहतु मल्टीपल चॉइस रे कौन क्रिएट कला कि गोटे पिला ना ऑप्शन देखि आंसर देला, फिल इन द ब्लैंक्स रे कौन क्रिएट कला कि ना डिक्टेशन रे टीचर जहाँ डाकिले ताहा लेखिला कौन नुआ क्रिएट कला किछि नै। तो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट जोटा कि आंसर हबो कारण से सेतिरे निजे एक्सपेरिमेंट करिकि प्रोजेक्टटा बनेला। तो आंसर कौन हबो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चलंतु Which of the following is an example of an observable learning outcome? Observable learning outcome कोटा से observe करके जानी परिबो। The student appreciate honesty और स्टूडेंट गोटे ऑनेस्टी को एप्रिसिएट करिवो। स्टूडेंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी स्टूडेंट बुझिला डेमोक्रेसी को। द स्टूडेंट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वार 1 विथ एविडेंस स्टूडेंट गोटे बुझिला वर्ल्ड वार 1 रो कारण करथिला आ तार एविडेंस कोन मिलिथिला। द स्टूडेंट डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस साइंस रो इंटरेस्ट को से डेवलप कला। तो कोटा ऑब्जर्व करिकि जानिला ऑप्शन सी हम आंसर वर्ल्ड वार 1 रो कॉज जानिला एविडेंस जानिला माने ताको एक्सप्लेन कला ताको बुझिकी एक्सप्लेन कला। तो सेटा ही आंसर हम ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए लर्निंग आउटकम शुड बी स्मार्ट द लेटर एम स्टैंड फॉर स्मार्ट एम रे स्मार्ट रो एम रे कौन हम स्मार्ट रो एम रे आंसर कौन हम कहतु मेजरेबल। चलतु देखिबा स्मार्ट रो फुल फॉर्म कौन। स्मार्ट रो फुल फॉर्म होची स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलिवेंट टाइम बाउंड। तो स्मार्ट रो जानी पारिले एस रो स्पेसिफिक एम रो मेजरेबल ए रो अचीव आर रे रेलिवेंट टी रे टाइम बाउंड हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन Which statement is most appropriate regarding effecting learning outcome? Effecting learning outcome ପାଇଁ को statement टा ठीक अछि। They focus only on content coverage. They describe what teacher will teach. They clearly state what teacher will know or be able to do after instruction. They assess only factual recall. They assess only factual recall। तो आंसर कौन हम ऑप्शन सी इफेक्टिव लर्निंग आउटकम कोटा दे क्लियरली स्टेट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम हम केतेबेले जितेबेले क्लियरली स्टेट व्हाट लर्नर विल नो बी एबल टू आफ्टर इंस्ट्रक्शन पिलाटी कौन जानिला इंस्ट्रक्शन परे से माने जे परफेक्ट जिते टीचर जानी जिबे गोटे पिला ताकर टीचिंग रे केते जिंस जानी पारिला सेतेबेले इफेक्टिव लर्निंग हबो हैला ऑप्शन सी हबो आंसर। चलंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following learning outcome best reflect the analyze level of Bloom's revised taxonomy? Analyze level analyze केतळे करिवो list the feature of democracy explain the importance of democracy compare and contrast parliamentary and presidential form of government design a new model of democratic governance। तो आंसर कौन होबो ऑप्शन सी compare and contrast parliamentary and presidential form of government। जेतेबेले सी compare contrast करिवो parliamentary आ presidential form of government को सेथिरे ही से बेस्ट एनालाइज करि परिबो ना जेतेबेले लिस्ट बनेबो भी से एनालाइज करिवोनी एम्ति बनै दबो एक्सप्लेन तो करदब इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिजाइन भी करि पारिबो। तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर स्टेट स्टूडेंट विल एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन व्हिच लिमिटेशन डज दिस लर्निंग आउटकम हैव। स्टूडेंट विल एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस of environmental conservation which limitation does the learning outcome have। So it is measurable, it is learner center, it uses unobservable verb, it is specific। तो आंसर कौन होबो आंसर होबो it uses it uses unobservable verb। it uses unobservable verb।
चलतु देखा केमती है इट यूजेस अनऑब्जर्वेबल वर्ब एप्रिशिएट ए डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड मेजर डायरेक्टली एप्रिशिएटा गोटे मेजर ऑब्जर्व आ मेजर करने डायरेक्टली डिफिकल्ट लर्निंग आउटकम शुड यूज मेजरेबल वर्ब कौगुड़ा एक्सप्लेन आइडेंटिफाई कंपेयर जस्टिस इभालुएट यही वर्ब गुड़ा जो भी थी से गुड़ा सब हूँ मेजरेबल मेजरेबल जो थी माने एक्सप्लेन आइडेंटिफाई कंपेयर जस्टिफाई इभालुएट ऑप्शन ले अच्छी माने आखि बुझी मारिदेवे ठीक अच्छे चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग कौन हम आंसर लर्निंग अकर मेनली थ्रू मेमोराइजेशन ना knowledge is transmitted directly from teacher to learner directly from teacher to learner कौन एटा भी तो नुह learner actively construct knowledge through interaction with experience एटा ठीक अच्छी प्राय learning depend on reinforcement only अच्छी माने भूल हो तो आंसर कौन हम ऑप्शन सी will be the answer बुझी पारिले चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following situation demonstrate positive transfer of learning? Positive transfer of learning कोटा a student confuse Hindi grammar rule with English grammar rule एटा ना एटा तो negative transfer a student uses एटा कौन algebraic reasoning to solve physics problem algebra जानी कि से physics करिवो एटा केमती होबो एटा एल्जेब्राइक रीजनिंग टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम एल्जेब्रा जानी कि फिजिक्स हाँ रिलेटेड टिके टिके अच्छी देखो तापर देखिबा ए स्टूडेंट फॉरगेट प्रीवियसली लर्न इनफॉरमेशन एटा तो हबो नाही मन रखिबा दरकार स्टूडेंट मेमोराइज आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग एटा तो नुहे रोट लर्निंग हे जिवो तो आंसर बी ही हबो ए स्टूडेंट यूजेस एल्जेब्राइक रीजनिंग टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम चलतु नेक्स्ट को जीवा व्हिच डोमेन ऑफ लर्निंग इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड व्हेन ए स्टूडेंट डेवलप एम्पैथी टुवर्ड पर्सन विथ डिजेबिलिटी एम्पैथी टुवर्ड पर्सन डिजेबिलिटी कॉग्निटिव साइकोमोटर एफेक्टिव बिहेवियरल कौन कही ये कौन हम एफेक्टिव एम्पैथी कथा कही एम्पैथी बिहेवियर सिंपैथी ए सब हेले एफेक्टिव डोमेन हुए आउ नॉलेज लेवल ले हेले कॉग्निटिव हुए स्किल हेले साइकोमोटर हुए हैला मन रखिले चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनोमी द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएट मेनली रिक्वायर टू लर्नर evaluate mainly required to learner recall fact organize information make judgment based on criteria and evidence create new idea तो आंसर कौन हम सीटा ही हम इभालुएट रे आमे कौन करि थाउ जजमेंट देई थाउ इभालुएट करि थाउ तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लर्निंग आउटकम objective describe what learner achieve outcome describe teacher activity एटा हबो कि देखंतु ऑब्जेक्टिव describe what learners achieve ऑब्जेक्टिव गोटे describe करे पिलाटी कोन अचीव करिछि आउटकम describe करे टीचर एक्टिविटी तो उल्टा हे गला आउटकम तो सब बेले स्टूडेंट एक्टिविटी को देखाय स्टूडेंट रो अचीवमेंट को हो चलत जिबा नेक्स्ट को ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्रेस टीचिंग इंटेंशंस आउटकम स्पेसिफाई लर्नर अचीवमेंट एटा ठीक है पारे ऑब्जेक्टिव आर मेजरेबल आउटकम आर नॉट ना एटा तो नुहे आउटकम मेजरेबल तापरे बोथ आर एग्जैक्टली सेम तो कौन हम आंसर कौन हम आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव सब बेले टीचिंग इंटेंशन को देखाए आउटकम अचीवमेंट लर्नर रो अचीवमेंट को तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which assessment method provide the strongest evidence that a learning outcome has been achieved at the center level achieved at the create level ले कोटा create रे कोटा हबो मल्टीपल चॉइस रे कोन क्रिएट करिवो मैचिंग रे नुहे पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ले से क्रिएट करिवो तो आंसर हबो ऑप्शन सी
Next question, which characteristics of learning is highlighted when learner modify existing knowledge after encountering contradictory evidence? Learner is passive, learner is dynamic and adaptive, learner is hereditary, learning depends only on age. Learning depends only on age. What is the answer? Learning is dynamic and adaptive. Option B will be the answer. Next question. A teacher design classroom activity that requires student to identify problem, generate solution, justify their decision. These activity mainly promote गोटे क्लासरूम रे कौन कौन आइडेंटिफाई करिवु प्रॉब्लम को, जनरेट करिवु सॉल्यूशन को, जस्टिफाई भी करिवु कोथिरे हेता है रोट मेमोराइजेशन तो नुहे, सरफेस लर्निंग रे तो नुहे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हे पारे, हैबिट फॉर्मेशन ओनली भूल से सी ऑप्शन ही हबो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि कौन कह जाए हट्स कह जाए है से कौन कौन आसे एनालाइज इवैल्यूएट क्रिएट. Any situation which bring about change in our behavior is learning. कौन होगा आंसर? लर्निंग प्रोसेस. जो सिचुएशन ले आम आम बिहेवियर को चेंज करिथाउ सेटा होची प्रोसेस. हाँ, लर्निंग एज एन आउटकम इंक्लूड, लर्निंग एज एन आउटकम इंक्लूड, learning as an outcome include cognitive, affective, psychomotor, all of the above. Option D will be the answer. Next question, the founder of constructivism approaches किए करिथिले? जीन पियाजेट. Next question, constructivism says that people construct their own knowledge through their experience. एट तो ठीक अच्छे people तार निज कौन एक्सपीरियंस बल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर ठीक अच्छे ना नहीं. True. Option A will be the answer. Which of the following is not a characteristics of constructivist classroom? कोटा constructivist classroom रो माने characteristics नुहे. तो इटा higher thinking, student autonomy and initiative are accepted, collaboration and discussion method is followed, lecture method is followed. कंस्ट्रक्टिव रे लेक्चर मेथड हे न थाए. कंस्ट्रक्टिव रे पियाजेट पिला को लिटिल साइंटिस्ट बोली कहिथिले. काहेकि करिथिले? पिला निजे कले ही सिखिबे हैला, पिला निजे ही कंस्ट्रक्ट करुथिले. टीचर कर रोल थिला एज ए फैसिलिटेटर. तो लेक्चर मेथड एठी होबनी. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following which is not a basic condition for learning? learning रो कोटा basic condition नुहे. reading, maturation, motivation, economic condition. कौन हम? रेडीनेस तो हम, रेडी थिबा दरकार, मैच्योरेशन हम, मोटिवेशन हम, इकोनॉमिक कंडीशन हमनी. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर इज ए साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम. कार्ल रोजर साइकोलॉजिस्ट कोठिकार? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, कोठिकार कहतु? अमेरिकान हैला. नेक्स्ट चलतु जीवा, ह्यूमनिस्टिक एप्रोच ऑफ लर्निंग गिव्स मोर इम्पोर्टेंस. क्या को ह्यूमनिस्टिक एप्रोच बेसी इम्पोर्टेंस देता है? सेल्फ डिपेंडेंसी. हाँ, एटी आसतु देखु सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उपरे गुरुत्व देथिले. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज that takes place during learning is called, the change that takes place during learning is called process, analysis, synthesis. कौन होगा आंसर? process, analysis, synthesis. change take place process. which of the following say about constructivism? constructivism विषय कोटा ठीक. knowledge can be constructed by interaction with environment, knowledge can be constructed by teacher. एटा तो हबनी, टीचर करेनि पिला ही करेंगे. knowledge can be constructed by rote memorization. पूरा पूरी भूल. knowledge can be constructed by रोट हम नोट हो जाए रोट मेमोराइजेशन. knowledge can be constructed by reading. भूल. तो आंसर कौन हम? ऑप्शन ए, knowledge can be constructed by interaction with environment.
नेक्स्ट चलतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्यू ऑफ पियाजेट रिगार्डिंग लर्निंग कोटा पियाजेट कर व्यू लर्निंग is a adaptive process. Learning is social in nature. Learning is influenced by learner developmental stages. Learning is gradual and assimilative in nature. कौन हबो आंसर कौन हबो Learning is influenced by learner developmental stages. पियाजेट लर्निंगटा केमती डेभलपमेंटाल स्टेजेस अनुसार होता है से जो चार्टा स्टेज देते कौन कौन सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल यही चार्टा स्टेज देकी पियाजेट को मतरे पिलार डेभलपमेंट होता है चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी Learning is an active process. Learning is a search for meaning. Learning is always contextual. तो कौन हबो आंसर लर्निंग इज ऑलवेज कंटेक्चुअल भी हबो लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग भी हबो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस तीनटा जाक ठीक अछि आंसर कौन हबो ऑल ऑफ द एबव Which of the following is not related to instructional strategy of constructivist learning? Instructional strategy कोटा constructive learning रो inquiry activity, discovery activity, teaching activity, problem solving activity. कौन हबो आंसर टीचिंग एक्टिविटी हबो नाही कंस्ट्रक्टिव रे तो इनक्वारी करिवो डिस्कवरी करिवो प्रॉब्लम सॉल्विंग करिवो टीचिंग एक्टिविटी हबो नाही आंसर कौन हबो तेबे ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविस्ट कल्चर ए कोटा कंस्ट्रक्टिविस्ट कल्चर रे इंक्लूडेड नुहे ए सेट ऑफ नॉर्म्स एटीट्यूड कंट्रोल एनवायरनमेंट बिलीफ एंड प्रैक्टिस कंट्रोल्ड ए सेट ऑफ नॉर्म तो हबो एटीट्यूड तो हबो कंट्रोल एनवायरनमेंट ही हबोनी तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is a constructivist view about the learner? Unique individual, unique need, unique background. तो आंसर कौन हबो all of the above constructivist view रा Next question. In constructivist view, the teacher is hard task maker, counselor, facilitator, director. कौन हबो टीचर को रोल facilitator. Option C will be the answer. Which of the following cannot be considered as a characteristics of learning? Learning ro characteristics कोटा नुहे it takes place only formal institution भूल अच्छी it is goal directed it is comprehensive it is result of practice and experience ये तीनटा जाक तो ठीक अच्छी एटा भूल अच्छी माने एटा ही आंसर हबो नेक्स्ट क्वेश्चन when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called जेतेबेले previous learning टा present learning उपरे किछि भी फरक पकाएनी ताकू कौन कहा जाए पॉजिटिव ट्रांसफर ना नेगेटिव ट्रांसफर ना जीरो ट्रांसफर ना एब्सोल्यूट ट्रांसफर कौन हबो जीरो ट्रांसफर जेमती कि फॉर एग्जांपल आमे जदी कुकिंग जानिते जो ताहले कहि पारिबानी कि जे आमे पानी देखिले स्विमिंग भी करि परिबा हैला सेटा होची जीरो ट्रांसफर किछि भी ट्रांसफर हेलानी कुकिंग रु स्विमिंग को किछि भी ट्रांसफर होबो कि होबोनी तो सेमती प्रकार लर्निंग को जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोले कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफाइन लर्निंग टू बी चेंज्ड इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस किए कहिथिले किमले आंसर विल बी किमले पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग Next question, what is the function of motivation in teaching learning process? It identifies the objective of learning, it identifies the method of teaching, it reinforces the learner behavior, it identifies the learner weakness. Teaching learning process रे फंक्शन ऑफ मोटिवेशन ना मोटिवेशन लो फंक्शन कौन मोटिवेशन लो फंक्शन होची हेटा हमको एनकरेज करि थाए तो माने इट रेनफोर्स द लर्निंग बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रे लर्निंग माने केमती फोकस करे द रोल ऑफ लर्नर
the role of learner in imitation, the role of learner in memorization, the role of learner in migration, the role of learner in creating new knowledge out of own experience. तो आंसर कौन हम ऑप्शन डी ओन एक्सपीरियंस रु जो नॉलेजटा गेन करा जाइए सेटा हम कंस्ट्रक्टिविज्म. Social constructivism according to Vygotsky is social constructivism Vygotsky को अनुसार acquire new knowledge based on the learner experience and cooperation with other, acquiring new knowledge during classroom transaction, acquiring new knowledge based on the learner previous knowledge, acquiring new knowledge from supplementary books. कौन हम आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन ए एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन लर्नर एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश लर्निंग फ्रॉम मैच्योरेशन. को स्टेटमेंटा लर्निंग रु मैच्योरेशन को डिफरेंशिएट करूची. कोटा लर्निंग अकर ओनली ड्यू टू बायोलॉजिकल ग्रोथ, एटा तो भूल गला. मैच्योरेशन डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन टा एक्सपीरियंस ऊपर डिपेंड करे कि व्हेयर एज लर्निंग डज नॉट, এটা তো হবনি. লর্নিং রেজল্ট ফ্রম এক্সপেরিয়েন্স হোয়ার ইজ ম্যাচুরেশন ইজ প্রাইমেরিলি ডিউ টু বায়োলজিক্যাল প্রসেস. এটা ହେଇପାରେ ବୋଥ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜମା ନୁହେଁ. ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି. ଲର୍ନିଂଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ, ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍. 50टा क्वेश्चन आज आम डिस्कसन कले. तो 50टारू आपण केतोटी करिपारिले ठीक मते कमेंट सेक्शन ले निहाती भाबरे जणैबे. तो नेक्स्ट क्लास रे आमे लेवल 2 ने कि आसीबु पेडागोजी रो. तो सेते पर्यंत आपण ए क्लास को सारंतु. आहुरी मध्य आमे मिशन टीचर गोटे आपण मानको पई पेडागोजी रो वन शॉट क्लास मध्य करिछि जोटा कि स्पेशली एसएसबी टीजीटी पई डिजाइन हेछि. तो सेटा हमर मिशन टीचर चैनल ले मिशन टीचर प्लेलिस्ट रे मध्य अपलोड अछि. जो माने भी देखि नाहंती जाइकी देखि दियंतु. देखि देले पेडागोजी आहुरी इजी हे जिवो. जदि क्लास टी आज रो भल लागिछि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जम्मा भूलिबेनी. आ हमर टेलीग्राम चैनल आ हमर व्हाट्सएप चैनल ले जाइकी जॉइन हे जिवे जोठी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रे सब मटेरियल्स मध्य शेयर करूछु आ स्टडी टारगेट भी दउछु. ठीक अछि आज पई एतिकी. पुणी देखाबो आ गोटे नुवा क्लास रे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.